Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great Vaheguru and Dandan Shri Guru Ramdas Ji, we will start our today's lecture. And our today's lecture is very important. That is totally based upon the Maxwell equation. In the last lecture, we have derived the differential form of Maxwell equation. And our today's topic is electromagnetic wave equation in a free space. Electromagnetic wave equation in a free space. See, this is a very important question in terms of exams. Okay, so the Maxwell equations and EM wave equations both are the important questions. Now see, I will start from the differential form of Maxwell equation. Now see, these four equations are the set of the Maxwell equations. These are the differential form. And for the free space, what I will do, what we will do for the free space, it means in free space is no charge. No charge means no Q. No Q means rho 0. Volume charge density 0 because volume charge density is equal to Q upon V. If Q is 0, 0 upon V 0. J 0, current density is 0. Okay. Sigma is 0, conductivity will also be 0. Okay. And epsilon is equal to epsilon naught and mu is equal to mu naught. Okay. Epsilon is called a permittivity and mu naught is called a permeability. Now see, these set of four equations for free space will become, equation number first will not certainly change. The equation number 2 will change because J is a 0 and equation third will also change because rho is 0, so del dot E is equal to 0. It means divergence of E is 0. Divergence of E means 0 means electric flux inward is equal to electric flux outward. Okay, and last but not least is del dot H is equal to 0. Now see, Maxwell predicted the existence of EM wave from these equations. From these equations, now let us find out the Maxwell equation in a free space. Sorry, electromagnetic wave equation in a free space. So I will start from this equation. Equation number 1. Equation number 1, del cross E is equal to minus curly B by curly T. So what I will do, I will take curl both sides. Take curl both sides. So it becomes del cross. This becomes del cross. Now see, this is a vector identity. A cross B cross C is equal to A dot C into B minus A dot B into C. This becomes del dot E into del minus del dot del into E. Del dot E is 0 from equation number 3. And del dot del is called del square. And del square is called a Laplace operator. Del square is called a Laplace operator. I will write here. Del square is called a Laplace operator. तो इसकी वैल्यू क्या होती है? कर्ली 2 by कर्ली x square प्लस कर्ली 2 by कर्ली y square प्लस कर्ली 2 by कर्ली z square. ये स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर होती है? क्या होती है? Is it a scalar quantity or vector quantity? Dot product of two vector क्या होती है? स्केलर नहीं होता, ये स्केलर ही आएगा ना. बिकॉज ये कहाँ से बना? डेल डॉट डेल से. कहाँ से बना ये? डेल dot del is equal to del square and dot product of two vectors always gives us a scalar number, scalar quantity. So clearly it is a scalar quantity. Okay. Now see, so I am getting this equation number 10. Use 10 and 7. So this becomes minus del square is equal to minus. So this curly by curly d will I take common. Okay. So minus will get cancelled with minus and b is equal to mu naught into h vector. So I will use this in equation. Mu naught is common because it's a constant. I will take outside. So del cross h is equal to curly d by curly t. I will use here. It will become curly 2d by curly t square. What is d? D is called a electric displacement vector. Electric displacement vector and d is equal to D क्या होता है? Epsilon naught into E vector. I will use here. So this is the one form. This is the one form of the electromagnetic wave equation in free space in terms of electric field. Now I will do the same thing for H, for the H magnetic fields. Now see what I will do. तो मैं क्या करूँगा? I will write here equation number 2. I will write here equation number 2. So what is this equation number 2? Del cross H is equal to curly d by curly t. Okay, curly d by curly t. Okay. Now take the curl of this. अच्छा इसको मैं यहीं पे चेंज कर दूं या आगे जाके चेंज करूं d को?
यही पे कर दें? यही कर क्या आगे जाके करना है? यही पे कर दो सर। Because G is equal to क्या होता है? Epsilon naught into E vector. So what I will do is epsilon naught taken outside, curly E by curly T. Now it is fine. Equation number एक को छोड़ो. ये थी equation number 2. Okay. Now take curl both sides. Take curl both sides. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये यहाँ पे आ जाएगा h, यहाँ पे क्या आ जाएगा h, यहाँ पे आ जाएगा del cross epsilon naught into curly E by curly T. ओके? और यहाँ पे क्या आ जाएगा D की जगह पे h, यहाँ पे क्या आ जाएगा h. मैं तो चेंज कर रहा हूँ, आपको सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h. Now नंबर चेक करते जाना. 5 6 this will become a 7 7 8 9 this will become h. This will become a h. This will become h. This will become h. This will become h. यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? माइनस एप्सिलॉन नॉट आई विल टेक कॉमन आउटसाइड, curly by curly T of del cross E. Del cross E. Okay. Now see this minus will get cancel out. I will get del cross H. Del square H is equal to क्या आ जाएगा? Epsilon naught curly by curly T of del cross E. What is del cross E? माइनस करली बी बाय करली टी. What is del cross E? Minus curly B by करली टी. give it equation number 11. Use 1 in 11. Use 1 in 11. Use 1 in 11. तो क्या है आंसर? Del square H is equal to epsilon naught curly by curly T. क्या आया? माइनस नहीं. हाँ जी. वो येड़ा तो काटता ही देते पास. यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो माइनस था ही नहीं. हाँ जी. यहाँ पे तो माइनस था ही नहीं. पहले में था. पहले में था. पहले में था, है ना? पहले में क्यों था? बिकॉज पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पे तो माइनस था ही नहीं, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना. एक यहाँ वो दूसरे पास भी माइनस. यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये इसमें नॉट कैंसिल है ना, ऐसी है ना. हाँ जी ठीक है, वहाँ पे माइनस नहीं था, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा ना. दूसरे पास से ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस. ऐसा. Okay, what I'm getting? I'm getting a del square H is equal to epsilon naught curly to B by curly T square. 12. Use 6 and 12. Use 6 and 12. Use 6 and 12. What I'm getting? Del square H vector is equal to mu naught epsilon naught curly to H by तो देखो सेम आएगी नहीं आई है. It is a same equation. It is a same equation. So this is the third 13. Equation 13 is called a electromagnetic wave equation for free space in terms of मैग्नेटिक. फोटो लेना भाई. magnetic field. Okay. In terms of magnetic field. Now see. I will club both these equations. So this will become पहली क्या आ जाएगी? Del square E is equal to mu naught epsilon naught curly to E by curly T square.
चेक करने में गलती तो नहीं है, ठीक है ना? ओके, एंड सेकंड वन इज सेम, curly to h is equal to mu naught epsilon naught curly to h by curly t square. So this is called equation 14 is called set of. Equation 14 is a set of two equations. One is in terms of electric field and other in terms of magnetic field. So equation 14 is the electromagnetic wave equation for free space in terms of electric field and magnetic field. You can take the click also. Okay. So this is the most important question, Maxwell equations and EM wave equation for free space. So these are the two important questions. So any doubt from this part? Now we will prove this. See, in the second part we will prove. In the second part we will prove this electromagnetic wave. This electromagnetic wave will travel with the speed of light. Will travel with the speed of light, which is c, which is equal to c. Okay. Now see, this is the question number 14. This is question number 14. So please write. Please write. Please write. The general wave equation. The general wave equation. The general wave equation of an undamped wave. The general wave equation of an undamped wave can be written as. So I will rub from here. Can be written as. Please, del square psi is equal to 1 by v square into curly to psi upon curly t square. Let us say this is question number 15. This is the general equation of a wave for undamped wave. Or you can say this is a general wave equation. This is a general wave equation for undamped wave. Now see, compare 15 and 14. Compare 15 and 14. Compare कीजिए इसको. सर अब ये तो 1 by these, देखो सब कुछ सेम है. All the things are same. Psi get replaced by E and H. Psi get replaced by E and H. And 1 by v square is get replaced by mu naught into epsilon naught. So what is v? V square 1 by mu naught epsilon naught. And what is v? 1 by square root of mu naught into epsilon naught. What is this v? This v is called velocity. This velocity, what is this v? This is called the velocity of a v. Now you know. Now you know the value of mu naught. What's the value of mu naught? 10 तक में किया था. What's the value of mu naught? 4 pi into 10 is power 10 raised to power minus 7. yes, mu naught is equal to 4 pi into 10 is power minus 7 and epsilon naught is equal to 8.85 into 10 is power minus 12. और यूनिट्स क्या आएंगे इसके? इसके आएंगे हेनरी पर मीटर. हेनरी पर मीटर इसके क्या आएंगे? epsilon naught के आएंगे फैरेड पर मीटर. Farad per meter. Use this value in this equation. Use this value in equation number 16. Equation number 16, and we get a value which is equal to 2.99. 2.99 into 10 is power 8 meter per second. Equation number 17. Which is ये किसकी वैल्यू है? So V is approximately equal to C, which is approximately equal to C. And what is C? C is called speed of light. C is called the speed of light. इसका मतलब क्या हुआ? This clearly suggests that electromagnetic wave travel with the speed of light, and that is equal to almost 3 into 10 to the power 8 meter per second. Hence, electromagnetic waves is light, or light is electromagnetic wave. Hence, electromagnetic wave travels with the speed of light. So light is EM wave. Light is EM wave. Light is
तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रूव दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो आप याद करना है, ठीक है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, एंड EM wave is EM waves are transverse in nature, are transverse in nature, are transverse in nature. Okay, EM waves are transverse in nature. So this ये जो 40 में equation set of the two equations, these are very important. These are the electromagnetic wave equation in terms of E and H for medium or for free space. Free For space. free space. This is for a free space. अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? How do you come to know about this कि ये free space के लिए या medium के लिए? देखो, अगर free space होगा तो mu क्या होगा? Mu naught. और epsilon क्या होगा? Epsilon naught. अगर simple mu और epsilon होगा, इसका मतलब वो किसी medium के लिए, वो क्या किसी? For example, अगर ऐसा होता, del square E is equal to mu epsilon curly to E by curly D square, अगर ऐसा कुछ होता तो ये किसके लिए होता? मीडियम। किसके लिए होता? तो म्यू, क्योंकि फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट, और म्यू बिकम्स म्यू नॉट। तो दिस इज द EM वेव इक्वेशन, यहां पे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ E and H, in terms of E and H, and out you can take it click also, in terms of E and H, in terms of E and H, so you can take a photo from there. Okay, okay. Now the next part we will do is electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. You know what is electromagnetic spectrum? पढ़ा हो आपने? Sir, क्या No, that is not. Emitting of light. See, can you have this? splitting of Yes, sir. How much time is left? 40 का 15 मिनट है। ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਈ। आपको स्ट्रोक करना गौर से वजह से आती है ना? Yes, sir. आती है ना? अब हम करेंगे इधर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, In terms of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? Splitting of light. What do you mean by spectrum? Spectrum means if you arrange light in increasing order of frequency or decreasing order of wavelength, तो वो क्या बन जाता है? Then it becomes a spectrum. Then it becomes a spectrum. Okay. Now see, the electromagnetic spectrum consists of a radio waves, visible light. Okay. You know, आपने पढ़ रखा होगा 10+2 में. So all those things. So please write. The electromagnetic spectrum consists of radio waves. The electromagnetic spectrum consists of number 1 radio waves, number 2 microwave. You use the microwave. Micro means small. Microwave. Third, infrared. Fourth visible. Fifth ultraviolet. Sixth X-rays. 7 gamma rays. 7 gamma ray. Okay. Now we'll talk one by one. What is radio waves? रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, कम होती है? रेडियो क्या होती है? ज्यादा। वेवलेंथ क्या होती है? सी
What is wavelength? What is wavelength? The distance between the two adjacent crest or two adjacent trough is called a wavelength. Please keep quiet. Okay. Now see, we have a relation for the photon E is equal to h nu. Number one, and we lose C is equal to nu lambda, so nu is equal to C by lambda. So both see equation 2 is proportional to mu is proportional to 1 by lambda 3. इसका मतलब अगर किसी वेव का if mu is more, lambda is less because both are inversely proportional to each other. Let us say if mu is maximum, frequency is maximum, then lambda will be minimum. If mu is minimum, then lambda would be maximum. Are you getting my point? और फोर्थ अब देखिए यहां से क्या आता है इक्वल टू h if frequency is more the energy is more, if frequency is more then energy is more, or you use 2 in 1, use 2 in 1 E is equal to hc by lambda 4. I mean to say if lambda is more energy is less, if lambda is less energy is more. One conclusion. Special case 1. Number 2. If frequency is more, energy is more. If frequency is less, energy is less. Okay. Number 3. If frequency is more, lambda is less. If frequency is less, lambda is so these are the important conclusions that you have to memorize. That you have to always memorize. Okay, so I will start from the radio waves. To run a radio, we need a big wavelength wave. We need a big wavelength wave. So it clearly means that the radio waves, इनकी wavelength क्या होती है? Large. It consists of a large wave. अगर wavelength ज़्यादा होगी, तो frequency क्या होगी? कम. अगर frequency कम होगी, तो energy भी क्या हो जाएगी? तो आई थिंक ये आपने पढ़ रखा है, यू हैव डन इन 10+2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सेकंड पॉइंट इज माइक्रोवेव. तो माइक्रोवेव में क्या होता है? माइक्रोवेव छोटी वेवलेंथ, माइक्रो मींस स्मॉल, माइक्रो मींस स्मॉल. ओके, so please write these are the short enough, these are the short enough, these are the short enough, and they have the wavelength from, microwave has the wavelength from 10 to the power 9 to 10 to the power 6, 10 to the power 9 to 10 to the power 6 angstrom. ये क्या होगा? मिनिमम. ये क्या होगा? मैक्सिमम. और रेडियो की होती है ग्रेटर देन 10 to the power 9, greater than 10 to the power 9 angstrom. Okay. Now the third, infrared. Third is the infrared. Infrared that comes under the range of 10 to the power 6 to 7,000 units are angstrom. Fourth is, what is the fourth one? Visible. Visible का क्या होता है? 4,000 to 7,000 angstrom. Okay. और विजिबल लाइट में क्या होता है? विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ कितने कलर्स होते हैं? हाउ मेनी कलर्स? विप ग्योर, VIBGYOR विप ग्योर. ओके, 7 camera. VIBGYOR. It means red has the wavelength of 7,000 angstrom and violet has the wavelength of 4,000 angstrom. Okay. After that, after visible, ultraviolet. Ultraviolet has the wavelength from 4,000 to 10. 4,000 to 10 angstrom. And see, ultraviolet rays are also used in the water purifiers. Also used in the water purifiers. अब देखा भी होगा वहाँ पे लिखा होता है अल्ट्रा, लिखा होता है ना वहाँ पे, लिखा होता है ना UV rays. ओके. अल्ट्रावायलेट के बाद क्या है? अल्ट्रावायलेट followed by X-rays. X-rays which has a wavelength of 10 to 0.1, 10 to 0.1, and gamma rays.
गामा रेस हैज अ वेवलेंथ ऑफ लेस देन 0.5. नाउ सी आपने देखा है कि रेडियो वेव हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉलोड बाय माइक्रोवेव. माइक्रोवेव की क्या है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है बट रेडियो से क्या है, कम. ओके, तो आप देख रहे हो कि ये वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. 10⁹ से स्टार्ट किया, कहां तक पहुंच गया, 0.1. तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा आ जाएगी, अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम. अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो गई तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ज्यादा. ओके, तो सी मैं इसके बारे में बताता हूं, एक्सरे एंड गामा रे. एक्सरे इज आल्सो कॉल्ड अ फोटोन, गामा रे इज आल्सो कॉल्ड अ फोटोन. बट व्हाट इज द डिफरेंस? एक्सरे आर द लो एनर्जी फोटोन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द मेडिकल एप्लीकेशंस. ठीक है, कोई फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ, देन वी डू दी एक्सरेज. ओके, दैट इज कंप्लीट डन बाय द डॉक्टर्स. तो एक्सरे इज कॉल्ड अ, इट इज कॉल्ड अ लो एनर्जी फोटोन्स, इट इज कॉल्ड अ लो एनर्जी. और गामा रे क्या होता है, गामा रे इज फॉर द हाई एनर्जी फोटोन. गामा रे इज द हाई एनर्जी फोटोन. तो सबसे ज्यादा एनर्जी गामा की होती है. ठीक है, और गामा रेस कहां पे यूज होता है, गामा रेस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर काइंड ऑफ डिजीज. ठीक है, फॉर द सीवियर प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ सी दिस इज लो एनर्जी फोटोन, दिस इज द हाई एनर्जी फोटोन. एक्सरे इज द एटॉमिक फिनोमेना, इट इज अ एटॉमिक फिनोमेना. ये एटॉमिक फिनोमेना, एटॉमिक फिनोमेना. और ये क्या है, ये क्या है, गामा रे क्या है, इट्स कॉल्ड अ न्यूक्लियर फिनोमेना, इट्स कॉल्ड अ न्यूक्लियर. मतलब इसका मतलब पता क्या है, it is emitted from the nucleus, it is emitted from the nucleus, that is why it has a heavy amount of energy. And it is emitted from the shells, from the atomic shells, that is why it has a lesser energy as compared to the gamma ray. So X-ray and gamma ray. ठीक है, so rest of the things you know. So this is the electromagnetic spectrum and it will definitely come in 2 marks, 2 or 3 marks. What do you mean by electromagnetic spectrum? 8 plus 2 10, 8 plus 2 कितना हो गया, 10 मार्क का हो गया ना आज पेपर. Yes, sir. हो गया. 8 either the question will come from actual equation or will come from the EM wave equation, and 2 marks question will definitely come from the electromagnetic spectrum. What do you mean by electromagnetic spectrum? And the most important are the visible light, because our eyes are only sensitive to see the, to observe the visible light colors. ठीक है, जो बाकी की कलर लाइट है वो दिखती नहीं है, पता नहीं पता. जो रिमोट आता है, रिमोट कंट्रोल में किससे सिग्नल जाता है, इंफ्रारेड से. दिखता है सिग्नल कभी? नो. जेबीडी दिखता है, जेबीडी. माइक्रोवेव से आप गर्म करते हो, यू यूज इन द किचन, दिखती है कभी वेव? नो, कलर नहीं दिखता उसका. ठीक है, are you getting my point? So we are interested only in the much more interested in the visible light. Okay, and that has a wavelength of 4000 to 7000 angstrom. So this is all about the electromagnetic spectrum. ठीक है, one more thing. ठीक है, now I will come to the again maxwell equation. Okay, we have derived the differential form, form. Now we will derive the integral form. We will derive the integral form of Maxwell equation. How it will come? It is मैक्सिमम इक्वेशन है यार, क्या? होता नहीं. माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो रेडियो से क्या है, कम है. ठीक है, वेवलेंथ कम हो गई मतलब एनर्जी क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा. तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी, समझ आई, इसीलिए वो किसमें यूज होता है. तो आपने देखा होगा माइक्रोवेव में जब भी आप किचन में यूज करते हो तो आई थिंक विद इन 1 or 2 मिनट्स तो सब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है. ठीक है, एंड बिकॉज इट इज जस्ट ड्यू टू दी एनर्जी, इट इज ड्यू टू दी एनर्जी. ओके, नाउ वी डू दी, टाइम हो गया सर. ओके टाइम. Yes, sir. Okay, we'll do in the next lecture. Thank you so much for listening. Thank you.